तो ये बुक में मैंने एक दिन पहले सारे फ्लावर्स रखे हैं जिसको मैंने ड्राई करने के लिए रखा है। इसमें है रोज़ की पेटल्स, फिर कुछ फ्लावर्स जो मैंने कलेक्ट किए हुए हैं गार्डन में से। ये रहे। मेरा साथ मेरा प्यार तो जीवन साकार, प्यार में बनूं मैं फुल टू राम। Hello everyone, welcome back to my channel, and in today's video we are going to make resin coasters. Yeah, I'm going to work with resin for the first time and we'll see how it turns out. I have seen many YouTube videos and I know what are the steps, but this is my first time, so let's get started. So this is the kit which I have ordered from Amazon. Epoxy Resin Kit. It will cost you around $20 and it is available on Amazon. So this is epoxy resin and this is the hardener. I have gone through the instruction of how to mix this solution, the resin and the hardener, and also in my description box I will mention the link from where you can order this kit. Now without wasting any time, we'll get started. So we got this 2 small measuring cups. And these are the sticks. They have also provided us with 3 colors, pink, blue and green, and they have this gold flakes. This can be used for decorating our coasters. They have provided us one sandpaper, and these are the molds which I have bought from Amazon. I will mention link for this molds in my description box. So if you like this, you can order it from Amazon. So while working with resin, it's important to wear gloves or wear a mask. Right now I don't have gloves, but yeah, I have mask, so I will just wear mask. Mention that the ratio should be 1:1. So it should be of equal quantity, resins and the hardener. So this is the measuring cup. I have taken both resin and hardener of same ratio, which is 60, and I'll pour the hardener in resin now. इस तरीके से मैंने एक थिन लेयर दिया है और इसमें जैसे आप देख सकते हो कि काफ़ी बबल्स है, तो थोड़ा हीट देके ये बबल्स निकल जाएंगे। ये जो फ्लावर्स हमने रखे थे हम इसे यूज़ करेंगे अब। इस तरीके से ये स्टिक के हेल्प से हम इसे प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं। ये कुछ गोल्ड फ्लेक्स दिए हैं तो हम इसका भी यूज करेंगे। सो गाइस, ये हमारा बन गया है और अब हम इसे 24 आवर्स सूखने रखेंगे और ऑब्वियसली इसे कवर करना पड़ेगा, वरना कोई भी डर्ट इसमें चला गया तो वो दिख के आएगा। तो मैं इसे अच्छे से कवर कर लेती हूँ। So it's been 24 hours and now we'll see how our coasters look. तो गाइस, ये जो मेरा कोस्टर है
वो थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा सॉफ्ट बना है। शायद जो मैंने रेशियो लिया उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, बट ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। आई एम श्योर कि नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं इससे अच्छा बनाऊंगी, और स्टे ट्यून्ड, मैं और ऐसे बहुत सारे बनाने वाली हूँ।